Hi everyone, welcome back to another video. So I'm going to start a new series on investment and portfolio diversification for every single one of you so that you can manage your money better and in turn generate more interest on the capital invested. And this video is for everyone who is in their early 20s because this is the time when you get your first job और जब तुम्हारे अकाउंट में पहली बार सैलरी आती है, you should ideally have an idea of what to do about the money that you have in your account. So if you have the knowledge about financial management, which is something not taught in our schools, in our colleges, you will be way ahead of your peers. And it's not just early 20s. Even if you are 25, 30, 35, 40, it's never too late to do the right thing. So abhi tak agar knowledge nahi tha investment ka, doesn't matter, you can start it right now. Start from the scratch, understand every single concept and then move ahead. So investment, trading, commodities, mutual funds, taxation, equity investments, cryptos. So without wasting any further time, let's start off with the video. So before we jump on to understand about investments, let's talk about money. And to be more precise, let's talk about the money spending habits of different categories of people that we have. So I generally categorize people into 4 different categories. Type 1. They get the salary and do you know how much they save? Zero, because they use the entire salary for their rent, expenses, shopping, clubbing, or trips or any other place. But they will not invest or save any of it. So that's the basic thing. Type 1 people और जिनका भी recently job लगने वाला है या जिनका job लगा है, you will see this is happening with you actually because आपको अपने account में पैसा दिखेगा and you do not know what to do of this money and वो कहीं ना कहीं आप use कर लोगे for trips, for shopping or any other place, but you will not be able to save a single penny. So this is type 1. Talking about type 2, people who get the salary, they use some amount of it for their expenses and stuff, but they manage to save some money. That means they keep some 10,000 rupees or 15,000 rupees of the monthly salary in their savings account itself. और होगा क्या? Next month फिर से आप 10,000 या 15,000 rupees save करोगे and slowly and steadily आपके salary account में पैसा बढ़ता चला जाएगा. So this is type 2 people. Type 3 people, they get the salary, but instead of keeping that money in their salary account, what they do is they take out that money and they invest it in some place which is giving them high returns, which can be equities, mutual funds, cryptos, gold or any other place, but they are making the investment. So that's the basic difference between a type 2 and a type 3. Type 2 is focusing on savings, type 3 is focusing on investments. And then comes the last category, type 4, the richest of the people, the top 1%. What they do is, as soon as they get the salary, just suppose if they are getting the salary, what they will do or what will be their mindset? They will just invest the entire sum or the entire salary into any of the asset classes and they will use the returns or the dividends for their expenses. So that's the mindset that you should have. So these are the 4 categories of people. So just pause the video and think which category do you lie in? Are you a type 1, type 2, type 3 or a type 4? If you are type 1, you need to jump to type 2. Slowly and steadily, you need to jump to type 3 and then to type 4. और ये transition में time लगेगा. It's not a one day show. ऐसा नहीं होगा कि आज ही तुम type 1 से type 4 पे चले जाओगे. It will take time. तुम्हारे habits change होने में time लगेगा and उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने में भी टाइम लगेगा. सो वन स्टेप एट अ टाइम. फ्रॉम टाइप 1 गो टू टाइप 2. अगर कुछ सेव नहीं कर रहे हो, स्टार्ट सेविंग. अगर सेव करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर and slowly and steadily you will reach a stage when you are a type 4 person and you will see the change, you will see the magic. So far you must have understood at least one thing, that there is some difference between saving and investment जो ये इंसान हमें बताना चाहता है. And that's the trick and the fun part. देखो, जब तुम्हारे पास सेविंग्स अकाउंट में तुम्हारे पास सैलरी आती रहेगी और तुम उसको सेव करते रहोगे, so slowly and steadily you will see 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs. And that's a very positive and a happy feeling. But let me tell you, it's a very bad thing for you. अगर तुम्हारे पैसे तुम्हारे सेविंग्स या सैलरी अकाउंट में, यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी. येस, दैट्स द ट्रूथ. Because of the very term known as inflation. Inflation is general increase of the price of goods and services in a country. That means महंगाई का बढ़ना. So suppose you have 100 rupees and if you want to buy something out of that 100 rupees, you will be able to do that. But अगले साल क्या तुम उसी 100 रुपए के नोट से कोई सामान खरीद सकते हो? The answer is no. क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो जो वो 100 रुपए की चीज थी वो आज 106 रुपए की हो चुकी है. एंड इफ यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट 100 रुपी नोट, तो तुम्हें 6 रुपए अपनी जेब से डालने होंगे. एंड दैट इज व्हाट यू आर लूजिंग एवरी ईयर. तो अगर तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सामान महंगा होता चला जाएगा और तुम्हारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं. सो यू आर एक्चुअली लूजिंग दैट गैप
जो इन्फ्लेशन से क्रिएट हो रहा है. So this is something which we do not want to do. And let me show you the chart. You will understand how inflation is affecting you. So this is the chart of inflation from 1960s to 2021. So 2022 का plot अभी नहीं है क्योंकि year अभी end नहीं हुआ है. So you will see कि पहले तो inflation was very high. हमारे पास ये 13% भी है. We see it as high as 28%, but slowly and steadily as we are moving ahead with time, आप इन्फ्लेशन का रेंज देखोगे कि इट्स समवेयर बिटवीन से 5% to 6% और 7% इंटरेस्ट रेट. दैट मीन्स आपका जो 100 रुपए की चीज़ है वो अगले साल 105 या 106 रुपए की होने वाली है. सो वाई नॉट पुट योर मनी एट अ प्लेस जो आपको 5 या 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट दे इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी. So understand this concept. First thing, अपना पैसा तो सेविंग्स अकाउंट में we are not keeping that because of inflation. Because सामान महंगा होता चला जाएगा and you will keep on losing money every year. And now comes the interesting and the important part, investment. So just imagine, जो 100 रुपए तुम्हारे अकाउंट में थे सेविंग्स या सैलरी अकाउंट में, यू टेक आउट दैट मनी, यू इन्वेस्ट इट इन अ प्लेस विच इज गिविंग यू मोर रिटर्न्स देन इन्फ्लेशन. सो सपोज इन्फ्लेशन इज 6%, you are investing that 100 rupees at a place which is giving you 12% returns. So what will happen? If you're getting 12% returns, that 100 rupees next year will be 112 rupees, right? So अब अगर आपको 106 रुपए का सामान खरीदना है, you can buy it. एंड उसके बाद भी आपके पास वो 6 रुपए बचने वाले हैं. सो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग मनी एवरी ईयर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्लेस एट अ प्लेस विच इज गिविंग यू मोर रिटर्न्स देन द इन्फ्लेशन रेट. सो दैट्स द होल पॉइंट, मेकिंग मनी ऑन मनी. पैसा पैसे को खींचता है, पैसे पे पैसा बनता है. इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस कोट, दिस इज हाउ इट इज. अपने पैसे को ऐसी जगह पे डालना है विच इज गिविंग यू मोर रिटर्न्स देन द इन्फ्लेशन, एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर गेटिंग से 10%, 12%, 15%, 20%, you will see the magic of a simple term, compound interest. The underlying concept of investment is compound interest. And as soon as I hear this term, कुछ याद आ रहा है? 8th class मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एक चैप्टर था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? तो उस टाइम पे हमने सिर्फ फॉर्मूलेज देखे थे और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जीरो था. बट इट्स द टाइम to understand the concept and apply in your real life and make your life more beautiful and fetch more returns. तो स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से. फॉर्मूला सबको याद होगा, P into R into T by 100. बट इसका मतलब समझते हैं. इफ यू हैव 100 रुपीज, सो योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10%, एंड योर टाइम फ्रेम इज फॉर 1 year. इफ यू आर कैलकुलेटिंग, टाइम पीरियड इज 1. So in 1 year with 10% rate of return, you will fetch 10 rupees, right? सो अब आपका जो एक साल के बाद अमाउंट जो 100 रुपीज था बन चुका है 110 रुपए. सेकेंड ईयर यू विल अगेन फेच 10 रुपीज रिटर्न बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट द रिटर्न्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यू विल हैव 120 रुपीज. And similarly, going down the line, after 10 years, you will have 200 rupees. That means you doubled your principal amount in 10 years with 10% rate of return. So this is simple interest. Now comes the interesting thing, compound interest, which will change everything. Let's see. So using compound interest, let's see. Compound interest का formula, it might sound complex. Amount equals principal, blah blah blah. क्या बोला तूने? Let's not look into it. इसको बहुत easily break down करते हैं. So simple concept क्या compound interest का? In compound interest, the returns that you get is on the final amount. तो आपके principal पे आपको return नहीं मिलेगा, आपके final amount पे आपको return मिलेगा. Still not clear? Let's see with the help of this example. So if you have 100 rupees और 10% रिटर्न है, एक साल के बाद अगेन आपको कितना रिटर्न मिलेगा? अगेन 10 rupees, and your final amount will be 110 rupees. But in compound interest, अब जो आपको 10% रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट ईयर, दैट विल बी ऑन 110 रुपीज एंड नॉट 100 रुपीज एज इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सो अब आपको 110 रुपए पे 10% का रिटर्न मिलेगा, एंड योर फाइनल अमाउंट विल बी 121 रुपीज. सो जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के केस में 120 रुपीज थी, इट इज नाउ 121 रुपीज. सो यू आर मेकिंग 1 rupee extra. So instead of 20, you have made 21 rupees. And similarly, going down the line, after 7 years, your total amount will be 194.87 rupees. So you can see कि 10 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट में you made 200, बट यहाँ 7 साल के बाद ही you have made 195 rupees. And similarly, if I go down the line, if I go down a bit, after 10 years, my total amount is 259.3. Let's put it 260. तो आपका अमाउंट है 260 rupees. So imagine this thing. आपके पास 260 रुपए बने हैं. इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट वॉज जस्ट 200 रुपीज. इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट,
you have made 260 rupees, 60 rupees more profit. And if you check it with a different point of view, you have made 60 rupees extra on 200 rupees, which is 30% more returns. So simple interest से compound interest में आपको 30% ज़्यादा return मिला है. So क्या इसको मिस करना चाहते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता. एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट. और अभी हमने 100 रुपीज़ को लेके बात किया और सिर्फ 10 साल के लिए. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इस अमाउंट को भी और इस टाइम फ्रेम को भी, you will see the magic. So I'll give you one other example and I'll share the Excel sheet in front of you, which will be very, very interesting. Alright guys, so on the Excel we have a real life example which will totally change the way you look at money and investments, and it's purely magical. So let's see if there is a person A. Let's suppose there is a person A जिसका अभी जॉब लगा है, he is 22 और he is getting 50,000 rupees per month from his salary. He uses 25,000 out of it for the rent, for groceries, for any other living expenses. 15,000 out of it to chill, party, clubbing, trips, shopping, any other thing. But the person A manages to save 10,000 out of it and invest it at a place which is giving it 10% return, which is a very decent return if you have the basics with you, if you understand how to select stocks, how to select say mutual funds, when to invest into them, you will easily be able to fetch 15% to 20% returns. But we are taking the bare minimum mark for the example. So just suppose 10% compound interest. And the yearly investment would be 1,20,000 rupees, which is 10,000 times 12. He started at the age of 22, and I'm just making sure that person A is investing till the age of 35, which is 14 years of investment. So the total investment by this person is 16,80,000 rupees. It's a big amount, right? And I'm not including any external factor. For example, if you were here, you might want to invest more. You might have a salary hike. You might be earning more. So I'm not taking any of these cases. It's a very, say, सबसे basic case लिया मैंने, so that you can see the power of compounding कि अगर इस case में ऐसा हो सकता है तो हम तो फाड़ सकते हैं, right? So you were able to save 16,80,000 rupees in 14 years. Now, if you are holding these investments till the age of 60, तो 35 के बाद आपने सारे इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए. जो 10,000 रुपए थे वो भी आप चिल करने के लिए यूज कर रहे हो या फिर एक्सपेंसेस के लिए यूज कर रहे हो, डजंट मैटर. बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी एनीवेयर. यू आर नॉट सेविंग अ सिंगल पेनी आफ्टर एज ऑफ 35, एंड यू जस्ट वेटिंग for the money that you have saved, 16,80,000 rupees, to grow till the age of 60. And you know what will happen? If you apply the compound interest formula, just have a look at it. 1,20,000 rupees, 1.1 raised to power 39, because it's 39 years from age 22 to 60. Similarly, going down the line, 38, 37, 36, 35, and you will have a sum of 4 CR, which is 4 crore rupees at the age of 60. So you have just invested 16,80,000 rupees, and at the age of 60, you are getting 4 crore rupees. This is the power of compound interest. Not exciting? I'll show you one other person who makes some small little mistakes in his life. So this is person B. Again, same salary, uses the same amount for the expenses, chilling, getting the same compound interest, and investing 10,000 every single year. So yearly investment is 1,20,000 rupees again. But ये बंदा क्या करता है? जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब सैलरी मिलनी शुरू होती है, he doesn't save anything. So आप देखोगे कि जहां पे पर्सन A 22 की एज से 35 की एज में इन्वेस्टिंग कर रहा था, वहां पे पर्सन बी ही इज जस्ट चिलिंग, अपनी लाइफ जी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है. सो ही इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग. सो द फर्स्ट 14 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जब से उसको सैलरी मिलना शुरू हुआ है, ही इज नॉट सेविंग एनीथिंग. बट एकदम से उसकी आंखें खुलती है, वो क्रिप्टेरा के प्लेलिस्ट देख लेता है, एंड ही स्टार्ट्स टू इन्वेस्ट. सो एट द एज ऑफ 36 ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग, और ये कहता है भाई मैं तो इन्वेस्ट करता चला जाऊंगा 60 साल तक. So for 25 years, he made the investment of 1,20,000 rupees till the age of 60, and he was able to invest 30 lakh rupees. तो पर्सन ए ने 16,80,000 रुपीज सेव किए थे, वहीं पे पर्सन बी ने 30 लाख रुपीज सेव किए हैं. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो इसके पास ज़्यादा पैसे होंगे एट the age of 60, but you are totally wrong. Let's look at the calculations. So you can see on the right column K, first 14 years, no investment, no returns. At the age of 36, here's the first investment, and you can see the formula. At 17, which is 1,20,000 rupees, times 1.1, which is 10% returns, raised to the power 25. So 25, because from 36 to age 60, it is 25 years. तो ऐसे ही आप जैसे जैसे नीचे जाओगे 25, 24, 23, and when you add all the numbers up, what you will see,
It's 1.29 CR. So he invested 30 lakh rupees and his final amount at the age of 60 is 1.29 CR. Whereas in the case of person A, he invested 16 lakh 80,000 rupees and his final amount is 4 crores, which is approximately 4 times the person B. So यहाँ से एक बात समझ आ रही होगी कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ग्रोज योर मनी एक्सपोनेंशियली, बट उससे भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कब करनी है. इट्स द राइट टाइम गाइज. अगर आज 19 के हो, 18 के हो, डजेंट मैटर, 20 के हो, 21 के हो, 22 के हो, 23 के हो, अभी इन्वेस्ट करना शुरू करो बिकॉज यू हैव सीन द डिफरेंस. कहाँ पे 1 CR, कहाँ पे 4 CR. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. इन्वेस्ट राइट नाउ. टाइम ग्रोज योर मनी. टाइम इज मैजिकल. जितना टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को दोगे उतना तेजी से वो बढ़ता चला जाएगा. सो दैट्स द होल पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो. Invest, start investing first thing. Start investing, doesn't matter what your age is, start investing right now. Second thing, start investing early. Do not wait for anything. अगर 20 के हो, 21 के हो, 22 के हो, अभी इन्वेस्ट करना शुरू करो बिकॉज धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टाइम के साथ यू विल सी द मैजिक. एंड दिस इज समथिंग विच आई रियलाइज इन माई लाइफ. आई एम यूजिंग दैट थिंग टू मेक माई लाइफ बेटर, हैव अ बेटर सराउंडिंग, हैव अ बेटर लाइफ, एंड आई एम विलिंग टू गिव द सेम वैल्यूज टू यू. और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट्स माई प्रॉब्लम. आई विल मेक श्योर कि यू नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट. बट इट्स योर डिसीजन कि तुम इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो या फिर रिमेनिंग 90%, 95% लोगों की तरह अपनी लाइफ एकदम जनरली जीना चाहते हो. सो दैट्स द होल पॉइंट, राइट? Thank you so much guys for joining me in this video. If you loved the video, just make sure to subscribe our channel for all the upcoming videos on this playlist, and just make sure you give us a thumbs up if you love what we are doing. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.